Okay, I'll start off. So many have requested I start from the basics, and few people have requested in Hindi also. So last time I did the whole thing in Hindi. So is Hindi overall okay? Is anybody insisting on English? Can you let me know either in chat or you can just unmute and let me know? Oh, okay, one person saying only in English. Let me do one thing. I'll start off in English and I'll also give a summary in Hindi. And if there is anyone who wants me to explain in detail in Hindi, just let me know. I'll explain in detail in Hindi also. So because I already have, frankly, actually, I already have lots of videos in English. So I was planning to do it in Hindi. But if there are people who are not comfortable with Hindi, then I'll do a mix of both. That would be better. Okay, let me start with English. Okay, this is the option chain. So I would suggest people to start with this. Open the first thing after market opens, just open the option chain and keep it on all the time, and then open the other tools in other tabs and go and doing the analysis. Option chain, the main thing to look at is are the two trend columns. These trend columns are based on build-up. So this is the build-up column, and just a minute. So this trend column is based on build-up column. So if on the call side, if you see the build-up is short build-up, there is a short build-up going on over here. So short build-up on the call side is bearish. So that is the reason why the trend is bearish. And if the build-up would have been long build-up, then obviously this would have been bullish. So it's that way. And on this side, on the put side, if you see, long build-up is bullish, because if long puts are being added, then they are bearish. So that's the reason why it is bearish is being shown. Same for short covering. If short puts are being covered, that means short puts are bullish. So if bullish puts are being covered, so then that is also bearish. So that's the reason why overall this is bearish. And this side also is bearish because it's all shorts. So that is how the interpretation is done. So you can either have continue having the build-up itself, or you can hide the build-up and have the trend enabled, and this will give you the summary of the build-up, interpretation of the build-up. The other things to look out for in the option chain are these cells that are highlighted. So in the OI column, on the put side, we highlight the max OI. So this is highlighted in green because the put side OI, this is the whole analysis of open interest is being done from a seller's point of view. So so this is considered to be seller dominated, and then the lots of puts being written or OI being held open is assumed to be put writers. So a lot of OI on put side is bullish. So that's the reason why this is in green. So similarly, OI change also. So OI change, that is for this day, this particular day, this option was shorted the most. So that is also highlighted. That is also highlighted in green because we assume these to be most writers are being dominated. They are dominating. So we assume that this is bullish. And these two are assumed to be bearish, exactly opposite to the puts.
So here lots of calls are being held. So positions, open positions are being held. So this is huge. So now this and these are considered to be, this is considered to be support and this is considered to be resistance for positional. For intraday, this is lot more important, but of course this is, since this is lower, so this is more important here, and this also has a lot of importance because lots of puts were shorted today because this is OI change. So similarly, these two here this is the immediate resistance on the call side, and then the next one is, this is another resistance on the call side. So this is about analysis of the option chain. You have other columns here, Greeks. You can enable volume, PCR also over here. PCR will give you both PCR of open interest and PCR of volume. PCR of volume is put volume divided by call volume. And this is the PCR of open interest. So put open interest divided by call open interest. So one thing to, when looking at these two columns, whatever PCR is there here, if this PCR has to hold, then this has to be high. Because if volume is continuing to be high at this strike, then this PCR probably can hold. Otherwise, if volume goes down, then the positions might get closed or whatever, and then this PCR might change significantly. So this tells you if this PCR of open interest is going to change or not. So that is what this would tell you. So this is about ऑप्शन चेन. अगर कोई है हिंदी में, अगर मुझे समझाना है तो मुझे बताइए, तो मैं समझा दूंगा. बेसिकली ये ट्रेंड वाला कॉलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेंड वाला कॉलम बिल्डअप के हिसाब से ये इंटरप्रेट होता है. यहाँ पे कॉल के साइड जब शॉर्ट बिल्डअप होता है, यानी कि कॉल, बहुत सारे शॉर्ट कॉल इनिशिएट हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं, वो बेरिश होता है. कॉल शॉर्टिंग ऑप्शन राइटर्स बहुत करते हैं, तो कॉल शॉर्ट जो होता है बेरिश होता है. तो इसीलिए ये शॉर्ट बिल्डअप कॉल के साइड बेरिश होता है. तो इसीलिए ये ट्रेंड बेरिश यहाँ पे इंडिकेट किया गया है. पुट साइड पे लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे है. लॉन्ग बिल्डअप मतलब ये चेंज जो है, यानी कि ये चेंज पॉजिटिव है, यानी कि पुट का प्राइस बढ़ा हुआ है, आज के दिन बढ़ा है पुट का प्राइस. और उसी के साथ वाई चेंज भी पॉजिटिव अगर हो, वाई चेंज भी अगर पॉजिटिव हो, यानी कि इसमें चेंज पॉजिटिव हो, पुट का प्राइस बढ़ा हो और वाई चेंज भी पॉजिटिव हो, तो लॉन्ग बिल्डअप होता है. और यहाँ पे पॉइंट्स बढ़े हैं लेकिन वाई घटा है इसमें, तो ये शॉर्ट कवरिंग होता है. शॉर्ट कवरिंग भी बुलिश होता है क्योंकि पुट साइड जो शॉर्ट होते हैं वो बुलिश होते हैं, तो अगर वो उसमें कवरिंग आ जाए तो फिर वो बेरिश हो जाता है. और ये तो लॉन्ग पुट्स जो होते हैं, यानी कि जो बेरिश होते हैं, वो अगर कम हो जाए तो फिर, या सॉरी, लॉन्ग पुट्स अगर कम हो जाए तो वो भी बेरिश होता है, क्योंकि लॉन्ग पुट जो होता है बेरिश होता है. तो इसीलिए यहाँ पे बेरिश इंटरप्रिटेशन. सो इसका जो ये ट्रेंड जो है बिल्डअप का, इसका इंटरप्रिटेशन होता है. तो आप ये बंद रख सकते हैं और सिर्फ ट्रेंड देख सकते हैं, और ये इंट्राडे देखते रहिए. और इससे ज्यादा फास्ट ट्रेंड दिखाने के लिए दूसरे टूल्स हैं हमारे पास, तो उसका आगे डिस्कशन करेंगे. लेकिन ये आपको ओवरऑल ट्रेंड बताता है, दिन का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है वो बताता है. सो दैट्स इट अबाउट ऑप्शन चेन. लेट्स गो टू नाउ. Sorry, your voice is not. Last column, when it Yeah. is on side, if it's showing trend is bearish, so Yeah. it is showing that the Nifty is in bearish zone, but it says puts are in bearish zone. Your voice is breaking. Can you put side? Sorry. No, trend is showing as a bearish on the Yeah. side. So Yeah. it means that Nifty is in bearish zone, or we have to sell the put. No, it just means this whatever script you have selected, this is overall analysis. So this is for the whole script as such. It's not just for this particular option. This is overall. For option itself, we'll go and take a look at other tools. Okay.
या तो ये जो है, ये इंटरप्रिटेशन जो है ओवरऑल निफ्टी के लिए इंटरप्रिटेशन, ये सिर्फ ये वाले ऑप्शन के लिए नहीं। दिस इज नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, इट्स फॉर ओवरऑल निफ्टी और वट एवर स्क्रिप्ट यू हैव सेलेक्टेड। एक क्वेश्चन था सर, हाँ, ये जैसे पुट साइड में 16,000 पे वाई जो है 37,32,000 है, और वाई चेंज जो है वो 15,800 पे है सर मैक्सिमम। सॉरी कौन सा वाला? अच्छा हाँ ये यस और ये। ये। हाँ, हाँ तो इसमें क्यों इसमें किसको हम लोग मतलब सपोर्ट कंसीडर करेंगे, 16,000 को या 15,800 को? ये देखिए, ये पोजिशनल के लिए ज्यादा होता है, ये ज्यादा चेंज नहीं होगा, धीरे से चेंज होता है इस, क्योंकि ये सारा वाई चेंज होता है, इस पे इफेक्ट होता ही है। मगर ये पोजिशनल के लिए, आप अगर पोजिशनल देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ओपन इंटरेस्ट का जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो, और ये वाला इंट्राडे के लिए ज्यादा होता है। इंट्राडे में आप दिन में जब ट्रेडिंग करते समय, इंट्राडे ट्रेड्स के लिए जब एनालिसिस करते हैं, ये ओआई चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वाला भी, क्योंकि इसमें ज्यादा कम नहीं है, ये ओआई और ये ओआई चेंज और ये ओआई चेंज में ज्यादा कुछ फर्क नहीं, तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये ऐसे देखिए कि दोनों मिला के क्या होता है, दोनों मिला के देखिए, अगर ये दोनों मिला के बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से ये दोनों मिला के ये सबसे ज्यादा हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्राइक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, वॉल्यूम का भी इसमें ऑन करें क्या सर, वॉल्यूम का कॉलम? हाँ, वॉल्यूम भी कर सकते हैं आप, तो वॉल्यूम, इस टाइम पे वॉल्यूम कहाँ पे सर मैक्सिमम? वॉल्यूम तो यहाँ पे ही, वॉल्यूम भी ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है, तो ये वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम तो जनरली जो एट द मनी और उसके आसपास ही होता है जनरली, सबसे ज्यादा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से एनालिसिस आपको ओवरऑल आगे सपोर्ट्स रेसिस्टेंसेस क्या है उसका आपको अंदाजा नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा एटीएम स्ट्राइक के आसपास ही होता है। वॉल्यूम सबसे ज्यादा तो वहीं पे ट्रेड होता है, ऑप्शन तो वहीं पे होता है, मगर ये एक्चुअल, क्योंकि ये पोजीशंस बन रहे हैं, तो ये और ये कैरी, सॉरी, हेलो, या सो, तो ये आप देखिए, ये पोजीशनल के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है इंट्राडे में जो होता है चेंज, ओआई चेंज, ये इंट्राडे में आपको दिन में ट्रेड करते समय ज्यादा कम होता है। और ओवरऑल आप जो पोजीशनल के लिए भी आप देखते हैं, ये दोनों ऐड कर के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशनल। अगर वैसे ही सीरियस वॉल्यूम हो, अच्छा खासा वॉल्यूम हो यहाँ पे, तो फिर वो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है वैसे। जैसे सर जिस डेट का हम लोग ये देख रहे हैं सर चार्ट, अभी जो हाँ, मतलब ऑप्शन देख रहे हैं, तो हाँ, क्या इस दिन सर ये वॉल्यूम को क्रॉस किया क्या सर? वॉल्यूम से नीचे गया, 16,200 पे मैक्सिमम वॉल्यूम है हमारे पास सर, ये 8 हाँ, करोड़ 41 लाख। क्या हाँ, इसको, इस सपोर्ट को ब्रेक किया उस डेट पे? शायद क्योंकि किया तो अगर ये होगा। सपोर्ट हम लोग 16,000 पे देख रहे हैं या 15,800 पे देख रहे हैं सर, मैक्सिमम वाई के हिसाब से सर, वाई चेन 15,800 पे है, और वाई जो है सर आपको 16,000 पे 37 लाख का है, जबकि वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम वाइज सपोर्ट जो 16,200 पे। तो क्या इस 200 और 150 के बीच में, 16,200 150 के नीचे गया क्या सर? नहीं गया, नहीं जाना चाहिए। हाँ, गया तो नहीं है। तो इसका मतलब सर वो जो वाई के बेस पे हम देख रहे हैं उससे ज्यादा इंपोर्टेंस इस वॉल्यूम का है, देखिए नहीं गया होगा सर। नहीं, वॉल्यूम आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वहाँ पे रुक गया, वो सिर्फ इतना ट्रेड हुआ है वहाँ पे, तो लेकिन आप मार्केट और नीचे जाता तो फिर शायद वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा हो जाता। तो वैसे वैसे तो होता नहीं है एक्चुअली, मेरे मेरे ख्याल से। आप देखिए, आप मेरे ख्याल से आप मॉनिटर कीजिए, मैंने तो ऐसे कुछ ऑब्जर्व किया नहीं है, तो नहीं आप आप देखो सर, जिस डेट का आप दिखा रहे हैं ना सर, उस दिन नहीं गया होगा सर, 150 क्रॉस नहीं किया होगा किसी भी हालत में वो, क्योंकि 16,000 पे लास्ट सेकंड वॉल्यूम है सर यहाँ पे, और उतना मतलब स्टैक प्लस नहीं क्रॉस नहीं, करेगा। आप उसका इंटरप्रिटेशन आप मेरे ख्याल से आप एक साइडवेज का डे लीजिए और उस पे कीजिए तो वो बेटर रहेगा। ओके सर। साइडवेज के दिन वो दिन मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो यहाँ तो बराबर दिख रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है, लेकिन वो फिर पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आप देखेंगे मार्केट जहाँ पे भी क्लोज हो जाता है वहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है वैसे भी, क्योंकि सारे इंट्राडे पोजीशंस
बंद हो जाते हैं, MIS के जो पोजीशंस बंद हो जाते हैं, तो वैसे भी वॉल्यूम काफी बिल्ड हो जाएगा लास्ट एंडिंग पे। तो अब पता नहीं, क्योंकि मार्केट यहीं पे सेटल हो रहा है तो इसीलिए ज्यादा वॉल्यूम हो या जी फिर सर, क्या। मॉर्निंग से ही रहा होगा, हालांकि मैंने नहीं देखा। अब जैसे सर ये कॉल साइड में देखिए रेजिस्टेंस जो शो हो रहा है सर, कॉल साइड में अगर वॉल्यूम का देखें सर उसका रेजिस्टेंस किस पे 16,300 पे है सर। यहाँ पे एक काम कीजिए आप, मुझे अभी तो हम देख नहीं पाएंगे ये, क्योंकि मुझे Yes, sir. सारे टूल्स में से जाना है। तो आप ये एक साइडवेज का डे देख लीजिए तो मेरे ख्याल से बेटर पता चलेगा। शायद वैसे हो भी सकता है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा नहीं, तो मैंने ज्यादा ऑब्जर्व किया नहीं। Yes, sir. देखिए सर 16,300 पे है ना सर मैक्सिमम कॉल हाँ साइड में, बराबर, इसो भी नहीं क्रॉस किया होगा सर नहीं मैक्सिमम क्रॉस चांसेस। वहीं पे ओपन हुआ है। राइट, करेक्ट, ठीक है, शायद हो सकता है, बराबर। ओके, मैं ठीक भी है सर, देखूंगा, नेक्स्ट। मैं भी यस ऑब्जर्व यस, करूंगा, मैं भी देखता हूँ। 80% डे में है सर, ये ओके  80% डे में होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, मैं भी ऑब्जर्व करूंगा। यस ओके, सर। नेक्स्ट जाते हैं क्यूमुलेटिव ओआई चेंज पे। और ये मैं क्यूमुलेटिव ओआई चेंज जो है, ये हमारा पुराना वर्जन है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज किया हुआ, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, तो इसमें जाता हूँ मैं। या बीटा के नीचे ये जो सारे टूल्स हैं, ये अभी एट प्रेजेंट हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। तो मोस्ट ज़्यादा काम तो ये फेनो चार्ट्स पे हो रहा है, लेकिन ये थोड़े दूसरे भी टूल और टोटल PCOI, ये इन दोनों में सबसे ज़्यादा हो रहा है काम, मगर इसमें भी थोड़ा काम हुआ था रिसेंट, तो इस ये यूज़ करके मैं बताता हूँ। तो इसमें जो है, ये मैं ये दूसरे लाइंस टेम्पररली निकाल देता हूँ। सो I'll explain in English first and then I'll just explain briefly in Hindi also. So this is a cumulative OI change chart. We call it cumulative because here uh, for the first minute we start this with 0, and then whatever the next OI comes in, it starts getting built from that cumulatively. That's the reason why we call it cumulative OI change. So OI change gets added and summed up cumulatively, and then these lines are formed. So then, so on whichever side there is more OI change, then that line will go above the other line. So this is calls, the line for calls, that is the total OI change, because I have selected all strikes here, all strikes option here. So for all strikes, the total OI change for call is plotted here, calls is plotted here, and total OI change for puts is the green line. So these color of these lines you can go and change from here, profile my account. If you go here, these call and put colors, you can change these lines. So I have changed from this to this. So call is red and put is green. So you can change that in your account from here. So in general, for the indexes at least, definitely most of the time, whenever the call line is above the put line, when you're looking at all strikes, when the call line is above put line, the overall trend sentiment or bias is bearish. So mostly the prices are going to mostly head lower. That is the assumption. So you still need to confirm with price. So the price also has to go down if this is being indicated. So you can't just assume that since call line is above put line that this is going to be bearish. So just check price, check with your technical patterns, technical indicators, or just plot VWAP. This blue line is VWAP. So prices have to mostly stay below this if this condition, OI condition, is to be true, and then the price has to head lower. So you need to cross check with price. Definitely, that's the reason why we are providing price chart also over here. So price has to confirm your OI bias or analysis. So here it starts with negative, and then for the whole day it stays negative. So if you are an option writer, you can probably just short naked calls or do lower bearish straddles or whatever, depends, or
call credit spreads. You could do all that. So based on, since it is going to be bearish. So here, the other things to for me to explain is you can select if you want to monitor only, if you want to see what is happening at any selected particular strike. So you can probably just monitor single strike. So once you click this selected strikes, you can go and change what all strikes you want from here. If you want single strike, then just select one strike here and monitor. So this will tell you at that particular strike price, at this particular strike price, what is happening, whether the writers are more or the call writers are more or the put writers are more. So this will tell you that. But the thing is, when you select this, by default, it will just take whatever is the current ATM price and plot it. So if you are using this, then you need to change. If you're starting to monitor it in the morning, then you can. This is around 16,300. So you'll probably change this to 16,300, and then when it drops down to closer to 16,200, then you'll change it to 16,200. So you might have to do that. So otherwise, then this will not be in sync. But you can change that as and when the price moves. Or the other way is to click on near ATM strikes. But here the minimum you have to is 3. People have requested us for 1. So like how in selected strikes you would select just 1. So you could do that here, and then it will be more useful when we select near ATM price and then auto adjust here. But let me finish this first. So near ATM strikes, 3 fixed center strike. You can select a center strike and then near ATM, which will mean that the center strike will be this, and then 1 strike below and 1 strike above. So total 3 strikes here, whatever you have selected here are selected. And for those 3 together, total, what is the call OI change and put OI change, that is plotted over here. So that again, if you see, once this crossed over, it went more bearish. So you can monitor that way. I think again, it has the limitation that you would have to change this. So morning, you'll probably be, if you come in the morning, you'll probably be monitoring your center strike will be 16.3 because this is 16.3 over here. So 16.3, 250, 300 and 350, this is what you will be monitoring. So then you will see that the right away it is bearish, like it is more like all strikes option. So you'll have to do all these adjustments if you select this. Now, if you don't want to do all these, then you can just switch to near ATM strikes 3 and say auto adjust. Once you say auto adjust, so wherever the current price is, automatically that will be used as near ATM, that is used as ATM strike. And then 1 and 2, 1 below, 1 above options are selected, and those 3 strikes are used to plot these. But then when you open this in the morning, so if you were here, then 16.3 would be automatically selected, 1 strike below and 1 strike above. And then as the price falls below like 250 or so, 250 over here it will switch to 16.2. And then these 3 will automatically, the switchover will happen. And then it will continue that way. So probably below like another 150 or so, below 150, it will switch to 16, 1 and 1 and 2 above, 1 above, 1 below strikes. So this option will do the adjustments automatically. But then you'll have to be careful because people use this and then forget that these keep changing dynamically. And then the whole picture also changes very quickly, and then it gets confusing. So if you don't know what you are doing, then you have to then just stick to all strikes, or then just stick to near ATM fixed, because this will keep changing the picture dynamically, because this allows you to do the analysis wherever the current price is. So that's the reason why you use this. So you have to be careful with this. So let me quickly brief. Okay, these two things are there. If you want to, now all these OI is in lakhs here.
So if you want to change that to lots, you can change it to lots over here. So this is lots now. Here also, whatever OI that you see on the tooltips, it's in lots now for the calls and puts. And if you want to see combined OI, now this is combined OI means, since now actually if this is option is not checked, then whatever expiry date is selected, the OI is only for that expiry. These strikes for this expiry. Now if you say combined OI here means all strikes, not just the 16 June strikes, all strikes, active strikes that are there. So this will show you the total OI of those strikes. So this is total OI. So if you select all strikes here with combined OI selected, this is now the all total OI of all expiries for all strikes. This is what you're looking at it right. And lots also is enabled. If you don't want lots, you want to see in this. So now see, since total it's combined OI here. So now this will be higher. I think I'll have to ask my people to check because this changed from lakhs to crores just now. I'll get this checked because this is still being built. So one or two small issues may be there. But now if you see, since combined OI is selected, this is now in crores. So a lot of, for all expiries, OI is going to be there. If I remove this, it will drop down to only 16th June OI, which will be, again, there is some issue here. It should be in lakhs actually. I'll get this checked. Let me change it. There's something, maybe this is, I'll have to get this checked with my team. There could be some issue here. So this is about it. Let me quickly brief in Hindi. Okay, here one more thing I forgot. Sorry, very sorry. So what you're looking at is option change by default, OI change by default. So if you want to see OI instead, OI instead of OI change, then you can click OI here. So this is now open interest actually. So this is not OI change, but open interest. So you can do that if you want. By default, OI change is the preferred one. So, and this is now OI. Okay, let me explain in Hindi. So ये cumulative OI change जो टूल है वो मेनली यहाँ पे होता है ऑप्शंस पे cumulative OI change, और ये भी इसमें थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन आ रहा है, तो कुछ फीचर्स ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो वो वाला जो मॉडिफिकेशंस के साथ जो है वो यहाँ बीटा मेनू जो है उसके नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा क्यूमुलेटिव ओआई चेंज बीटा। तो ये टेस्टिंग वर्जन है, अगर आपको लेटेस्ट फीचर्स चाहिए तो आप ये इसमें देखिए, वरना आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार इसका टेस्टिंग खत्म होने के बाद हम लोग ये यहाँ पे इस पे ऐड कर देंगे और ये चला जाएगा, इसमें ये फीचर्स आ जाएंगे ये वाले सारे। तो ये मैं इसके साथ बताता हूँ यहाँ पे। तो ये टूल है वो क्यूमुलेटिव ओआई चेंज बीटा। तो इसमें एक तो चेंज जो है यहाँ पे कैंडल स्टिक वाला चार्ट दिया है हमने, यहाँ पे प्राइस का एनालिसिस यहाँ ओआई के साथ कर सकते हैं कैंडल स्टिक्स जो है यूज करके। और ये दूसरे जो लाइंस है वो वीवैप लाइन है यहाँ पे, और ये वाला जो लाइन है कॉल ओआई चेंज है, यहाँ पे ओआई चेंज सेलेक्टेड है, तो ये कॉल ओआई चेंज है और ये पुट ओआई चेंज। और ये यहाँ पे मैंने ऑल स्ट्राइक सेलेक्ट किया है, तो सारे के सारे स्ट्राइक्स का टोटल पूरा का पूरा ओआई चेंज है वो यहाँ पे दिखेगा। सुबह में 0 से स्टार्ट होगा ये और वहाँ ऐड होता रहेगा दिन भर, कॉल का ओआई चेंज यहाँ पे और पुट का ओआई चेंज। ये अगर कॉल का ओआई चेंज पुट के ओआई चेंज से ऊपर हो, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ओवरऑल पूरा बेरिश होता है, मार्केट बेरिश होता है। तो आप वो सेंटिमेंट बेरिश होता है, ओआई के हिसाब से बेरिश है, लेकिन फिर प्राइस से आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा उसमें। तो प्राइस अगर कंफर्म करता है तो फिर ये ओआई का एनालिसिस भी जब सपोर्ट करता है तो आपको बेटर मूव मिलेगा उसमें। तो आप पहले ये ओआई का देखिए और फिर उसके बाद प्राइस भी जब कंफर्म करें तब आप जो एक्शन ले सकते हैं, जो आपको यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना हो या कॉल स्प्रेड्स शॉर्ट करने हो, जो भी आपको ट्रेड करना हो,
तो बेरिश ट्रेड आप ले सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये ऑल स्ट्राइक्स का जो है पूरा ओवरऑल मार्केट का दिखाता है, या जो भी आपने स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है उसका आपको दिखाता है। तो अगर आपको सिर्फ कुछ ही, और ये ऑल स्ट्राइक्स का है, ओवरऑल मार्केट का दिखाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये तो आप एक बार देख ही लीजिए, दिन में सुबह में एक बार देख लीजिए। और आपको अगर स्ट्राइक के हिसाब से आपको अगर देखना है तो स्ट्राइक सेलेक्टेड स्ट्राइक्स ऑप्शन में जाइए, और जो भी आपको स्ट्राइक देखना हो वो स्ट्राइक आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे कॉल वाले और ये पुट वाले, और फिर ओके क्लिक कीजिए, और ये आपको उस स्ट्राइक का कॉल और पुट का ओआई यहाँ पे दिखेगा, ओआई चेंज दिखेगा आपको। ओआई चेंज सुबह से कैसे चेंज हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो जो अगर आप कॉल्स डायरेक्टली और ये दोनों ऑप्शन पे ही एनालिसिस करना चाहते हैं, आप ये दो ही आप फोकस करके उस पर ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और ये जब जैसे ही पहले आपको यहाँ पे पूरा ये बुलिश दिखा रहा है 16,200, क्योंकि ये आप 16,200 सेलेक्टेड है जो यहाँ की ये प्राइस यहाँ पे है। लेकिन आप सुबह में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस 16,300 पे था, तो आप ये 16,300 के हिसाब से देखें। मैं यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो दिखा देता हूँ 16,300, 16,300 ओके। तो सुबह में आप देखेंगे 16,300 आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 16,300 के पास है, तो आपके सुबह से ही आपको ये बेरिश दिखाए सुबह से, तो आप बेरिश ट्रेड ही लेंगे आप। अगर आप ये दो ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ये कॉल शॉर्ट या पुट बाय या कॉल स्प्रेड, कॉल का स्प्रेड आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ट्रेड्स आप ले सकते हैं क्योंकि ओवरऑल बेरिश है। तो पहले फिर से बता देता हूँ, पहले आप ऑप्शंस के ओआई चेंज का सेंटीमेंट देखिए, आपको क्या बेरिश बुलिश जो क्या दिखा रहा है। आप कॉल वाला लाइन अगर ऊपर दिखा रहा है तो फिर वो बेरिश है, तो आप बेरिश ट्रेड्स ले सकते हैं इसमें। और जैसे अगर आप ये सेलेक्टेड स्ट्राइक्स यूज कर रहे हैं, तो जैसे आप मार्केट 200 के आसपास जाए, 250 के नीचे चला जाए या उसके 250 या 225 के नीचे चला जाए, तो आप इसको चेंज कर दीजिए 16,200, क्योंकि ये वाला एनालिसिस यहाँ के लिए बराबर है, 16,300 के लिए बराबर है, लेकिन 16,200 के लिए बराबर नहीं। तो 16,200 पे अगर जाए तो आप ये 16,000 वैसे ये करके मैं ये कर लेता हूँ 16,200 आ जाना चाहिए, आया नहीं होता 16,200। तो ये 16,200, तो 16,200 आपको अगर आप यहाँ से शायद इसका एनालिसिस चालू करेंगे, क्योंकि 250 के नीचे आ गया है यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, नेगेटिव ही दिखा रहा है, यहाँ तक नेगेटिव ही दिखा रहा है। तो ये ऐसे कंटिन्यूस एनालिसिस करना पड़ेगा। ये आप ऑल स्ट्राइक्स का पूरे मार्केट के लिए एनालिसिस कर सकते हैं, और स्ट्राइक लेवल पे चाहिए तो स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए, मगर आपको एट द मनी स्ट्राइक के पास रहना पड़ेगा। तो ये आप वैसे देखिए, या आप एट द मनी के आसपास के स्ट्राइक्स देखना चाहते हैं तो आप ये नियर एटीएम यूज कर सकते हैं। नियर एटीएम, लेकिन सेंटर वाला जो स्ट्राइक है एटीएम वाला, वो आप फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप रहेंगे तो 16,300 आप यूज करेंगे, तो ऐसे सुबह में आप ये करेंगे 16,300, तो यहाँ पे बेरिश दिखाएगा, और नीचे जब जाता है तो इसको आप 16,200 सेलेक्ट, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं जी। ऑलमोस्ट सेम रहेगा सेलेक्टेड स्ट्राइक, या क्योंकि ये पूरा का पूरा फोकस इस पे सेंटर स्ट्राइक का ही होता है, और यहाँ पे वैसे भी आसपास तो 50 वाले स्ट्राइक्स हैं, तो आप वो निकाल भी दीजिए। आप सेलेक्ट यहाँ पे आपको 50 के स्ट्राइक्स नहीं लेने हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्राइक्स करके निकाल के आप 100 और 300 भी ले सकते हैं, जैसे करना है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको यहाँ पे, तो आप ये वैसे आप जैसे स्ट्राइक्स चूज करना हो चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जब आप फिक्स करते हैं पूरा का पूरा पूरे दिन फिक्स रहेगा जब तक आप चेंज नहीं करेंगे। ये सेंटर स्ट्राइक जो इसमें यहाँ पे हम लोग फिक्स लिखा है, तो ये फिक्स्ड रहेगा पूरे दिन के लिए। तो आपको अगर डायनेमिक चाहिए कि जैसे मार्केट जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे आपको ये 3 स्ट्राइक्स चेंज करके आपको चेंज करा दे, और डायनेमिक जैसे मार्केट मूव हो रहा है उसके हिसाब से एनालिसिस दे, तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए नियर एटीएम स्ट्राइक्स, 3 नियर एटीएम के 3 स्ट्राइक्स, और ऑटो एडजस्ट मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना चाहिए। ये 3 स्ट्राइक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने चाहिए, मार्केट जैसे मूव होता है
उस हिसाब से। तो अब सुबह में आपको ये 16,300, 16,250 और 16,350 ऐसे दिखाएगा, और जैसे मार्केट नीचे जाता रहेगा ये वैसे ही चेंज होता जाएगा, और ये नीचे 16,200 के आसपास ये आपको ऐसे दिखाएगा। तो आपको डायनेमिकली बराबर एनालिसिस आपको दिखाते रहेगा नियर एटीएम क्या एनालिसिस चल रहा है। तो ये है, और इसमें ये लॉट्स में अगर आपको देखना हो ये ओपन इंटरेस्ट, तो आप ये लॉट्स में देख सकते हैं। ये इसको क्लिक कर लीजिए, और ये आपको कंबाइंड ओआई देखना है। ये अभी आप ये जो ओआई देख रहे हैं ये सिर्फ इस एक्सपायरी का है। अगर आपको सारे एक्सपायरीज का टोटल ओआई कितना है, ओआई चेंज कितना है देखना है, तो आप ये कंबाइंड सेलेक्ट करें, और ये जो है ओआई चेंज दिखा रहा है। आपको ओआई अगर देखना हो तो ये क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे ओआई दिखा, आपको ऐसे देखेंगे तो आप ये ओआई दिखा रहा है अभी। ये ऑल स्ट्राइक्स कर लीजिए, अब ये सारे के सारे ऑल स्ट्राइक्स, पूरे के पूरे स्ट्राइक्स का टोटल ओआई दिखा रहा है। ये कंबाइंड सेलेक्ट करेंगे तो सारे एक्सपायरीज का, सारे स्ट्राइक्स का टोटल ओआई ये दिखाएगा, ये वाला है। तो ऐसा है। तो इसमें कोई डाउट? हेलो सर, हाँ बोलिए सर। सर, ये जो चार्ट आ रहा है सर, इसका टाइप सर मुझे आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। टाइम का चार्ट जो है, मेन चार्ट जो है सर, कौन से टाइम फ्रेम पे है सर? ये 1 मिनट बार्स हैं, 1 मिनट वाले बार्स। 1 मिनट बार है सर, और इसको हाँ। चेंज कर सकते हैं सर 15 मिनट्स या 1 आवर में? नहीं, ये चेंज नहीं होगा ये, लेकिन ये कुछ लोगों ने दिया है ये रिक्वेस्ट, और मैंने नोट किया है, तो मैं देखता हूँ Yes, कि sir, yes, sir. इसमें टाइम फ्रेम ऐड हो सकता है या नहीं। अगर हाँ, ये तो अभी नहीं है। ठीक है सर, यही पूछना था कि ये 1 मिनट का है या 3 मिनट्स का या 5 मिनट्स का है। जी, 1 ठीक मिनट है वाला सर। है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। इसमें और कोई डाउट? एनी डाउट्स यू हैव, एनीबॉडी? और आई कैन गो टू द नेक्स्ट टूल। Okay, so we'll go to the next tool. This is multi-strike OI. Now we had seen cumulative OI change, which is cumulative. So it is all open interest or OI change that you see is added up, and then the lines are displayed. Now, if you want to see separate lines for different strikes, separate OI change or separate OI lines, then this is the tool you could use. Well, why would somebody use this tool? Because it quickly tells you if you are looking at trending strikes, that is the trend. When I say trending strikes of OI change, it means where is the max OI change coming from? Those are the trending strikes. So max OI change is coming in from these strikes. And in these strikes, if you see all reds here. For me, red is call. So because I've changed it in my profile. So immediately I see most are reds. So for me, immediately it tells me that the market is bearish. So that's the reason why I use this particular option, and mainly these multiple line colors I don't use, because if you want, you can use. If you see multiple line colors, then you would have to look and see in the tooltips whether this is call OI change or put OI change when you are in trending strikes. So if you remove this, then you will very easily know all are red. So I know immediately that this is call OI change. So a lot of call writing is going on, so it is bearish. So I know it immediately. So that is why I uncheck this box over here. So now you can also look at trending OI. So OI, this will be mostly for positional. So positional, that is carryover. OI means this will get carried over. So all these are positions that are getting carried over to the next day. So now this is again bearish. So positionally also Nifty currently is bearish. That is what that you can identify quickly here. Again, the other strikes are same. If you don't want trending, then you can select selected or near ATM. Then all those options are very similar, like what you have seen in cumulative OI. So I'm not going to explain anything again. So but trending strikes is important here, because
gives you a quick snapshot of what is happening. I mean, where is a real big OI change coming from, or OI where it is a lot of OI is being held at the moment. So this is it. This black line is the price chart, and this is the PCR. PCR is very important. PCR is put OI divided by call OI. So now when you see this, the focus should be on not on the value of the put call ratio, but I also suggest you to look at the trend of the line, this blue line, which is the PCR. If the price is steadily going down, this blue line, that is the PCR is continuously going down, then it is bearish. Now, whenever you see these big flat lines, it just means that there is some kind of consolidation going on. So this is that consolidation that we see here. So once when you see a consolidation, price could turn and go up from here. So then these sentiment would not be valid anymore. We are seeing this as a bearish sentiment. But at the same time, this consolidation can end by trend continuing as it was before. So price has been falling since morning. So consolidated and then again fell down, consolidated, fell down, consolidated, fell down. So these flat areas are consolidation. From there can be a trend change, or price can fall. It can the trend can continue. So flat areas are important. Just keep an eye on those. I mean, these small flat areas may not be important, but if you get longer flat areas, though, then you need to think about it. The thing is, the logic is like this for flat areas. If you see PCR, we have restricted it to 2 decimals. So it just means we are restricting the fluctuation. We are not showing the fluctuation here. We can show, I mean, other tools or other data tables, we show PCR up to 4 decimals. But if we show it here, then there'll be a lot of fluctuation. You would not be able to gauge the trend. So we have restricted it to 2 decimals. So it just tells you, it just keeps the smaller fluctuations out, and it tells you what kind of trend is going on. So that's why this is good to look at. So keep an eye on this. So other thing is IV. So IV line is available for the overall script in this tool. So you can, if you want to keep an eye on IV, so when market suddenly falls and there is a IV spike, big spike. Now market has fallen, so IV has gone from here to here. So intraday, if people see a big spike, then they would like to sell options, because then they get that slight edge where you get the option prices are slightly inflated once the IV shoots up. So whenever IV goes up, then people like to short options. So you could monitor this overall IV over here if you want. So you could do that. That is one additional tool that we have given in this particular chart. VWAP is there. It depends. If you want to enable, you can enable. Too many lines will be there, so you can keep this disabled, and then, or even this disabled, and then based on what you want, you can enable. So this is it. So instead of OI change, you can switch this also. I'll just quickly brief in Hindi also. So ये जो मल्टी स्ट्राइक OI टूल है, हमने क्यूमुलेटिव OI चेंज में देखा था कि उसमें सारा का सारा OI या OI चेंज जो होता है वो उसमें ऐड होके एक सिंगल लाइन बनता है, मगर ये मल्टी स्ट्राइक OI टूल जो है, जो आप देख रहे हैं आप, वो इसमें क्या है कि अलग अलग लाइंस दिखाते हैं. जो भी सिलेक्टेड स्ट्राइक्स होते हैं, तो आप कोई भी स्ट्राइक सेलेक्ट कर लो या नियर एटीएम स्ट्राइक सेलेक्ट कर लो, जो भी सेलेक्ट हो जाते हैं स्ट्राइक्स आपकी क्राइटेरिया से, वो लाइंस के अलग अलग OI चेंज के लाइंस दिखते हैं, या OI, अगर आप OI क्लिक करेंगे तो OI की लाइंस दिखेंगे आपको. तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स जो हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं, और आप ये मल्टीपल लाइन कलर्स अनचेक कर दीजिए. आप अगर चेक करेंगे तो ये आप अलग अलग लाइन के कलर्स आएंगे. एक बार आप अनचेक कीजिए और ये देखिए, आपको तुरंत आइडिया आ जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है. ये सारे के सारे अगर लाइंस आप रेड देख रहे हैं, लाल देख रहे हैं, तो या
लाल कलर जो है मेरा, मैंने कॉल्स के लिए सेलेक्ट किया है ये प्रोफाइल में जो मैंने दिखाया था। तो अब ये स्नैपशॉट एकदम एकदम आपको यहाँ पे दिख जाता है कि मार्केट बेरिश है, सारे के सारे लाल दिखे। तो अगर आपको ये ऊपर वाले 2 लाल दिखेंगे और ये अगर आप ये नीचे वाले 3 ग्रीन दिखें तो फिर भी शायद स्लाइड बेरिश हो, क्योंकि टॉप 2 जो है वो बेरिश है। तो लेकिन 3 जो है ग्रीन है, तो शायद साइडवेज मार्केट हो सकता है, लेकिन बहुत सारा ओआई चेंज फिर भी बेरिश की तरफ है। तो आपको थोड़ा आप सोचेंगे कि बड़ा वाला शायद बड़ा बेरिश, आप बड़े लॉट साइज पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि साइडवेज दिखा रहा है। तो अब ये सारा आप एक झटके में आपको मालूम पड़ेगा कि ये ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स अब अगर आप देखेंगे और ये अनचेक करें, तो भी अगर मार्केट बुलिश हो तो सारे के सारे ग्रीन हो जाते हैं इसमें। तो आपको आइडिया तभी आ जाएगा कि सेंटीमेंट पूरा का पूरा ग्रीन है, तो अब तुरंत आप जाके प्राइस देखिए और प्राइस के हिसाब से झट से ट्रेड ले सकते हैं, आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो वैसे आपको जल्द से जल्द अगर सेंटीमेंट एनालिसिस करना है तो आप ये भी एक बार देख सकते हैं। तो ये इसके लिए, तो ये आपको बिल्डअप दिखा रहा है। हाँ, ये मैंने इंग्लिश में आप बताया नहीं मैं। See, this build-up, this is a build-up. You are seeing this build-up by default. You can see unwinding also if you want, where unwinding is going on. So the unwinding strikes, whichever strikes most unwinding is going on, they'll be listed over here. So if you want to see where unwinding is going on, you can take a look here. Build-up here. तो ये आपको unwinding अगर देखना हो तो unwinding भी कहाँ पे हो रहा है वो देख सकते हैं। तो अब देखें कि अनवाइंडिंग पुट के साइड हो रहा है, तो मार्केट गिरते जा रहा है। मार्केट अगर गिरेगा तो पुट वाले सारे पोजीशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि उनके लिए रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो अगर यहाँ पुट शॉर्ट करके बैठे हैं 16,300 पे या 16,200 पे, तो उनका वो लोग लॉस पे जा रहे हैं, तो वो लोग बंद कर देंगे, वो ट्रेड्स बंद करेंगे, तो आपको अनवाइंडिंग दिखेगा। तो इसीलिए सारे के सारे पुट्स में अनवाइंडिंग सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत बेरिश है। और ये बिल्डअप देखेंगे, सारा का सारा बिल्डअप कॉल्स में है, क्योंकि मार्केट बेरिश है। तो ये ऐसे आप ये देख सकते हैं इसका एनालिसिस। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो इसके बारे में पूछिए मुझे। कोई डाउट, एनी डाउट? सर इसमें आपने जैसे बताया सर कि बिल्डअप भी हो रहा और वाई का और में अनवाइंडिंग दोनों एक ही में हो रहा। नहीं, एक ही में नहीं है। आप अगर देखेंगे ये बिल्डअप का, आप देखिए सारे के सारे कॉल्स हैं, 16,300, 16,500, 16,400, 17, 16,200, ये सारे के सारे कॉल्स है। आप अनवाइंडिंग में जाके देखेंगे तो ये सारे के सारे पुट्स है। पुट अनवाइंडिंग हो रहा है। हाँ, पुट में अनवाइंडिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ वो रिस्क में है सारे पोजीशंस इनके। क्योंकि यहाँ देखेंगे 16,450, 16,500, ये सारे के सारे ऊपर के पोजीशन है जो सारे अब लॉस में है, तो ये सब सारे पोजीशंस बंद हो रहे हैं यहाँ पे, वो है। और कोई क्वेश्चन, एनी अदर डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, और वी कैन मूव? ओके, सो we'll मूव टू द नेक्स्ट टूल। अब ये टूल्स, ये 3 टूल्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्यूमुलेटिव ओआई चेंज, मल्टी स्ट्राइक ओआई चेंज और टोटल पीईसी ओआई। अब ये क्यूमुलेटिव का बहुत सारा फंक्शनैलिटी टोटल पीईसी ओआई में भी अवेलेबल है, तो ये मैं दिखा दूं। और इसमें आप हम लोग काफ़ी और बहुत काम हो रहा है इस पर, और भी काम होने वाला है। तो ये आप मैं बीटा में जो अवेलेबल है वो वाला वहाँ पे लेके जाता हूँ आपको, टोटल पीसीओआई बीटा। तो ये इस पे बहुत सारा काम हो रहा है हमारा, तो और भी इसमें फीचर्स कुछ बाकी है, वो भी ऐड होने वाले हैं, काफ़ी ऐड हो चुके हैं अभी ये। तो आप ये बीटा के नीचे जो है वो वाला यूज कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल। तो अब ये जो है आपको मार्केट ओपन होते ही यहाँ से चालू हो जाएगा। ये आपको फ्यूचर्स प्राइस, फ्यूचर्स, let me quickly explain in English and then I'll go to Hindi. Total PEC OI change is available over here under options, but the one under beta is where we have added lots of features, and we'll be adding a lot more features. So use that. Once the testing over here is done, we'll move this to options menu. So this is the one. We'll go through it for now.
Now, once market opens, after whatever, based on whatever time frame you have selected, this particular, the first row starts updating once that particular time frame is over. So if you have selected 3 minutes, then it will start at 9:18. This gets updated. So you start analyzing it only after that. Now here you will see futures price change. Now this is slot wise here. So this futures price change that you see is the difference between this and this. Difference between this and this is this. Difference between this and this is this. So this you will see slot wise price change over here. This is the VWAP for futures. Futures VWAP. Futures overall IV here, which is generally the average of ATM IV, ATM strike IV. This is the total futures OI. Total, when we say, it is still for not the combined one, it is still for this particular expiry. So rather, obviously, since there's a futures, it will be for the monthly expiry, but it is only for that particular month. This is only for the June month. It is not for the total all expiries today. So this is total futures expiry, futures OI change. So this OI change again this OI change is difference of this and this, slot wise OI change. So this is there to quickly see where actually unwinding is quickly happening. So you'll see, then you can go and take a look at further. Sorry, this I'm very sorry. This is unwinding of futures, not options. Unwinding of futures. So you can see, I mean, you'll still get an idea of what is happening. The unwinding is definitely, if you see unwinding after a big build up, then it is a kind of a pause. So you will know that the market is pausing a little bit. So you'll quickly able to see. Earlier we didn't, this was not slot wise. So we have changed this slot wise to let you identify the pause in the market. So this is useful for that. Total COI, total PEOI. Now this is based on, these totals are based on whatever you have selected here. If you select all strikes, then this is the total call OI of all strikes. This is total put OI of all strikes. If you have selected strikes, then it will be selected. Whatever strikes are selected for that total call and put OI. This is the ECR, which is this value divided by this value, is this value. And this difference of PCOI, this is this OI minus this OI is this. Now this is COI change for whatever strikes you are looking at. This is the total OI change for this particular slot. That is from this to this, from between this and this minus this is this. This is CE. So this minus this is this, and this minus this is this. OI changes slot wise time, this time slot wise OI changes. So this OI changes for 3 minutes from here to here. So it is like that. ECR of OI change is this OI change divided by this OI change. You get this. This difference is this minus this. Put OI change minus call OI change is this. OI change trend. Now this trend is nothing but, this OI change trend column is nothing but this minus this. OI, this difference of OI change, how it is changing. So this OI change trend will tell you that, like this, whether a lot more. Now this buildup is happening. So this buildup is happening. Which side is getting built up more? So this will tell you negative. So that means call here, both side buildup is happening. So the only way to know is using this, the call buildup is more. So that is what this quickly indicates. And this will tell you that cumulatively, now this is negative buildup is happening. This is what it tells you. This cumulative is actually the running sum of this. There are a few traders who quickly wanted to have a snapshot of how overall since morning, what is the cumulative total of this OI changes. That is what this tells you. This is most of the days on sideways days and all, this could be different, but most of the days it will follow. If it is a one side trending day, this will almost be similar to this cumulative. It will be almost similar to this. Just very slight difference will be there. But on sideways days, it will be completely different. So you might get some idea there. Now, the main thing that you need to identify here are
these points where unwinding is. Before that, let me tell you, we have two charts here. These options are very similar. You don't need to, I don't need to explain. So whatever, based on whatever strikes are selected, you get these numbers. Total CEOI, total PH, OI change, call and put. So all these stats are based on these selected strikes. You can switch these to lots if you want. You click this and you get all this in lots. All these figures are in lots. So I'll remove this for now. And these two are charts. If you collapse this is a table, data table. If you can click here to collapse the table. Now here we are getting charts. Here two charts are there. One is this OI diff charts. This will be very similar to cumulative OI charts. When you have all strikes selected, this will be very similar to that chart. You can say select call OI change, put OI change. This is very similar to cumulative OI change. Now, if you select OI change, percent OI change. So these percentages are getting plotted. These percentages, call OI change and put OI change, they are getting plotted over here. Here this way. Call OI change is red, put OI change is green. You can change these colors from here, as I said. It will be easier to have red as call OI change, green as put OI change. Now here the main important thing here is to identify the values that you see below the zero line. This is the zero line. Let me zoom it a little bit. I have zoomed it, so 930 data goes to the left side here. Now is whatever you see below the zero line, this is unwinding. This is unwinding. Unwinding is important to analyze because unwinding means that there are people who had held positions on this side. Now they are not able to hold that position. So this is put OI change, negative put OI change, negative put unwinding is going on here. At 11:30, put unwinding happened 0.81% and 1.76. This is significant. I think 0.5 to 0.75 and more, I think this is significant. So this put, whenever you see put unwinding happening, then that means the market may be going to the downside. You should still look on the price chart and see what is happening. So similarly, if you see market at probably, let me go here. This little bit of unwinding was there, not that significant, 0.38. First indication was over here at 11:30, 11:33. From here, if you see on the price chart, this is what Bank Nifty. We are looking at Bank Nifty. $11:30, 11:25, 11:30. This is where we got the indication that things are going to go seriously down. There is something significant issue is going on because people who are holding, because obviously it was the first market opened over here, went down, and then from there went sideways, consolidated. So when market opened big with a big gap, generally people would assume that it could reverse, fill the gap and all that. But then once it stops and consolidates, then this particular low gets to be very important. Once that gets broken here at 11:25 with strong P unwinding, then that is a big warning. So this is what unwinding is, what you should keep an eye on. So this is where it started. Let us see what happened here. This again at 12:42 and 12:45 again. If you see, those will be important. 12:42 and 12:45 is this. Now it just says that significant people have taken out put side positions have been closed. Over here it got closed, over here it got closed. So you need these kind of unwindings will tell you that the downtrend is intact. So it kept it. This was very small. This was okay. This was significant. This was significant. It kept on getting unwinding at significant positions. Now here some call unwinding also was there, but more than double was put unwinding only. So that here also significantly more put unwinding. So let's see. If you see, mostly all put unwinding is there only. So you can. This is one very, I think, very crucial, very critical
thing that you can use to keep an eye on the health of the trend. So whatever intraday trend is going on, you can take a look at it. If you don't want this is too much noise, you can just collapse this further and maybe get it to 15 minutes also. So you'll know big indication that was there. It was at 12:45. But you'll lose some information where this was there. So you have lost some information. So if you have on a lower time frame, your analysis needs to be a little bit good. You need to know where it is significant. Significant 0.5 and above, I assume it to be significant. 0.5% and above is significant. I mean, when I say significant, you can't just take a look at this and just straight away go and short the market. No, you need to go back to your charts and see, I mean, what you can do. You can just, you can take a look over here and then see where your supports and resistances are. And then based on that, you can decide if you want to go short or do what you short calls, go short call spreads or whatever. But this will give you significant clues. Let me quickly explain in Hindi also. ये जो टोटल PECOI का जो है, ये मेनली यहाँ पे होता है. तो इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो हम लोग यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे. इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है, तो मैं अभी वही एक्सप्लेन करूँगा. आप जाके उस पर यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं उसको. तो ये वाला जो टूल है, ये आपको यहाँ पे पूरा टाइम वाइज फ्यूचर्स प्राइस चेंज, फ्यूचर्स का VWAP, IV एवरेज IV, एट द मनी IV का एवरेज होता है IV, और ये टोटल फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है. कंबाइंड नहीं है, ये जून मंथ का ओपन इंटरेस्ट है. कंबाइंड सारे एक्सपायरीज का नहीं है, तो सिर्फ ये वाले एक्सपायरी, ये वाले मंथली एक्सपायरी का फ्यूचर्स का OI है. और ये फ्यूचर्स का OI चेंज है, यानी कि इसमें से आप ये निकाल दें तो ये आएगा आपको, इतना OI चेंज हुआ है यहाँ पे फ्यूचर्स का, ये है. और ये आप यहाँ पे जो भी स्ट्राइक्स आप सेलेक्ट करेंगे, जो पहले हमने, ये फिर से डिस्कस नहीं करूँगा मैं, तो ये जो यहाँ पे जो भी स्ट्राइक सेलेक्ट हो जाएंगे उसका टोटल कॉल OI, टोटल पुट OI यहाँ पे आता है. उसका PCR आता है यहाँ पे, पुट OI डिवाइडेड बाय कॉल OI, और ये डिफरेंस है, ये पुट और कॉल OI का, ये दिस वैल्यू, ये वैल्यू का डिफरेंस है. और ये कॉल OI चेंज, पुट OI चेंज, तो ये यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, ये है. ये दो टाइम के बीच में का जो चेंज है, तो टाइम स्लॉट वाइज होता है ये पूरा, ये पूरा डेटा टाइम स्लॉट वाइज होता है, टाइम के हिसाब से. और ये वैसे ही ये वाला PCR जो है OI का है, ये वाला PCR OI चेंज का है. तो ये पुट OI चेंज डिवाइडेड बाय कॉल OI चेंज, तो आपको ये मिलेगा. और ये वाला डिफरेंस है, ये पुट OI चेंज और कॉल OI चेंज का डिफरेंस इतना आता है. तो ये टोटल का है, सॉरी ये टोटल का है. ये दिस माइनस दिस, ये और ये माइनस करने से डिफरेंस ये नहीं आएगा. ये एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो ये हम लोग टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं. तो ये टोटल कॉल का आज के दिन का जो ओपन इंटरेस्ट है पुट का, वो डिवाइडेड बाय टोटल कॉल OI चेंज आज का. तो ये उसका डिफरेंस, और ये उसका PCR ये है, और उसका डिफरेंस जो है ये है. ये OI चेंज का ट्रेंड है, ये दो वैल्यूज जो होते हैं उसका डिफरेंस जो होता है ये होगा. यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें और इसमें जो डिफरेंस है 2 लाख के करीब, वो ये है. और ये इसका जो रनिंग टोटल होता है वो ये है. तो ये साइडवेज के दिन आपको काम को आएगा, ट्रेंडिंग के दिन तो ऑलमोस्ट सेम होता है, ये और ये से ऑलमोस्ट सेम हो जाता है. तो ट्रेंडिंग के दिन थोड़ा काम को आएगा. और ये यहाँ पे आप लॉट्स चाहे तो लॉट्स में देख सकते हैं, पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट वगैरह पूरा लॉट्स में आएगा ये सिलेक्ट करने से. और यहाँ पे नीचे 2 चार्ट्स हैं हमारे. तो ये जो टेबल का जो हेडर है, इस पे यहाँ पे जाके आपको कोलैप्स कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, तो आपको चार्ट दिखेंगे नीचे. ये OI डिफरेंस का चार्ट है, ये क्यूमुलेटिव OI चेंज की एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम चार्ट होता है. तो ये आपको और दूसरे भी लाइंस चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, IV वाला लाइन वगैरह ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे सेम क्यूमुलेटिव OI चेंज का चार्ट है.
तो अब ये दूसरा चार्ट है जो अनवाइंडिंग का चार्ट। तो बिल्डअप और अनवाइंडिंग का चार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब ये देखेंगे कि इसमें हमने ये जो यहाँ पे ये जो नेगेटिव जो आपको दिखता है यहाँ पे माइनस में जो फिगर्स है यहाँ पे वो, और ये प्लस में भी जो भी यहाँ के जो ये OI चेंजेस जो है टाइम स्लॉट वाले टाइम के हिसाब से वो यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं ये चार्ट पे। तो ये जो है जीरो के नीचे का आपको, जीरो के नीचे आपको जो दिख रहा है वो पूरा अनवाइंडिंग। और वो 3 बजे के बाद का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सारे पोजीशंस बंद करने वाला अनवाइंडिंग होता है। अनवाइंडिंग मतलब ये पूरे के पूरे दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जो होते हैं यहाँ से 3 बजे के बाद उनके चालू हो जाते हैं पोजीशंस क्लोज होना, जो एल्गो वाले होते हैं या जो और भी दूसरे होते हैं ट्रेटॉन वगैरह जो भी होता है, तो वो ये सारे ऑटोमेटिकली क्लोज होते जाते हैं पोजीशंस। तो 3 बजे के बाद का उतना एनालिसिस करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन सुबह में जो होता है मॉर्निंग, यहाँ पे जो अनवाइंडिंग होता है उसके तरफ, अनवाइंडिंग जब होता है तो उस तरफ रिस्क होता है लोग, यानी कि लोगों ने ऊपर के प्राइस पे जो ऑप्शन शॉर्ट किए हैं, पुट ऑप्शन शॉर्ट किए हैं, और मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो फिर उनको वो पोजीशंस क्लोज करने पड़ते हैं, या जो भी है जो स्प्रेड क्लोज करके नीचे के ओपन कर लेंगे या जो भी करेंगे, जो पोजीशंस ऊपर के हैं उनको अनवाइंड करना होता है। तो वो अनवाइंडिंग यहाँ पे दिख जाता है। और ये जो 0.5%, 0.6% के ऊपर हो तो वो बड़ा अनवाइंडिंग समझ सकते हैं आप। तो ये वाला यहाँ पे अनवाइंडिंग काफी बड़ा है। तो अब ये देखेंगे कि 11:30 के आसपास चालू हुआ, 11:33, और यहाँ पे 11:42, 12:42, 12:45 ये यहाँ पे दिखा रहा था। यहाँ पे जो है सुबह का जो मूव था गैप डाउन करके, यहाँ पे जो मॉर्निंग के जो कंसोलिडेशन चालू हुआ यहाँ से, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। तो जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ था तो यहाँ पे जो उस प्रीवियस डे के जो शॉर्ट्स थे वो होल्ड कर रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद गैप फिल हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हो गया तो फिर ये लोग यहाँ पे और रुक नहीं पाएंगे, तो उनको पोजीशन क्लोज करना ही पड़ता है। तो वो वाला अनवाइंडिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो 11:45 यहाँ पे आपको वो अनवाइंडिंग यहाँ पे दिख जाएगा आपको, इस यहाँ पे वो हुआ था स्टार्ट। और आप देखेंगे कॉल के साइड कुछ भी अनवाइंडिंग नहीं हुआ है। अगर कॉल के साइड होता तो वो बुलिश ऑपोजिट साइड होता। अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड आपको ये रेड लाइन नीचे दिखते हैं, आपको सारे रेड वाले लाइन नीचे आया था, यानी कि कॉल के लाइन। अब पुट के लाइन एट प्रेजेंट पूरा का पूरा पुट साइड पे पूरा प्रेशर है यहाँ पे, तो इसीलिए आपको पुट का अनवाइंडिंग दिख रहा है यहाँ सब जगह। तो आप ये ऐसे आप ये देख सकते हैं आप कि आप अगर बड़े ट्रेड में हो तो आप ये आपको पूरे दिन होल्ड करना हो, यहाँ पे आप कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो आप ये मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अनवाइंडिंग पुट साइड हो रहा है। अनवाइंडिंग अगर पुट साइड का हो गया, रुक गया, और ये नीचे वाले लाइंस, ये रेड वाले लाइंस नीचे आने लगे लेकिन ग्रीन वाले नहीं दिख रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आपको, अगर आप कॉल शॉर्ट में है तो फिर आपको निकल जाना चाहिए, जो भी है आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप रेड लाइन था लेकिन आप ये कॉल का अनवाइंडिंग हुआ था यहाँ पे, लेकिन आप ये देखेंगे कि उसके साथ साथ पुटवर्क का अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा था, डबल से भी ज्यादा था। यहाँ भी बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा था, यहाँ पे 0.7 हिसाब से 1.23 था अनवाइंडिंग, ये फिर भी काफी ज्यादा था। तो आप ये ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई डाउट हो, एनी डाउट्स अबाउट दिस टूल? Any doubts? हाँ श्रीकांत जी। हाँ बोलिए। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, ऐसे तो यहाँ पे पूरा ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मैं ये पूछ रहा था, ये जो ओआई चेंज का कोई ग्राफ मतलब अलग से नहीं होता है ना? आई मीन अपने यहाँ पे नहीं है ना? जैसे ट्रेंडिंग, सपोज मार्केट इज गोइंग डाउन, तो ओआई चेंज का ग्राफ डायरेक्टली नीचे आएगा, राइट? उसके बाद में सडनली अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ग्राफ का चेंजमेंट जो होता है, मतलब वैसे तो फिगर देखने से हमको पता चलता है, बट अदरवाइज कोई ग्राफ जो है दिया जा सकता है? क्यूमुलेटिव ओआई चेंज का यूज कर सकते हैं।
या फिर ये यूज कर सकते हैं। ये ओके जो कॉल ओआई चेंज, पुट ओआई चेंज, आपको अगर पर्टिकुलर सिंगल लाइन ग्राफ नहीं होगा ना, लाइक स्ट्राइक, ओवरऑल ओआई? नहीं वैसे तो कोई नहीं। ओके वो ओआई वैसे तो ओआई मॉनिटर कर सकते हैं चाहे तो। ये जो दूसरे वाले हमारे टूल्स हैं प्राइस वर्सेस ओआई, इस पे आप ये रेड लाइन आइडेंटिफाई कर, ये ओआई है, तो ये नीचे ओके ये कहाँ से नीचे आता है वो आप वैसे मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन ओके ओआई चेंज का ऐसे होता नहीं है वो कुछ ऐसे ओके अलग से। ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? तो ये जो टोटल पी सी वाई डिफरेंस टेबल जो है सर, हाँ तो ये फ्यूचर का शो रहा, तो क्या नॉर्मल मतलब ऑप्शन और फ्यूचर का सेम ही मतलब होता है क्या? जैसे फ्यूचर का आप बता रहे थे, फ्यूचर प्राइस के बेस पे। कौन सा? ये वाला, ये हाँ। ओआई चेंज, ये फ्यूचर्स का है। तो यही सेम चीज ऑप्शन के लिए भी मतलब वर्क करता है या उसमें अलग होगा? नहीं ये वाला, ये फ्यूचर्स का हम लोग कहीं भी नहीं दिखा रहे हैं। ये जो आपको ओआई चेंज यहाँ पे दिख रहा है, यस सर, वो ये ओआई चेंज ऑप्शन वाला है। ओआई चेंज ऑप्शन वाला है सर। हाँ ऑप्शन वाला है, फ्यूचर्स वाला नहीं है। ओके सर, और डाटा जो इसमें सर वॉल्यूम भी आ जाएगा? नहीं वॉल्यूम नहीं है सर, इसमें वॉल्यूम नहीं है। और किसी ने रिक्वेस्ट किया था मुझे वॉल्यूम, वॉल्यूम तो एट प्रेजेंट तो नहीं है मेरे पास, यहाँ हमारे यहाँ वॉल्यूम कोई। ज्यादा काम करता है सर। अच्छा ठीक है, मुझे एक्चुअली सर दो तीन रिक्वेस्ट आए थे रिसेंटली, तो मैं देखता हूँ मैं हाँ वॉल्यूम पे। ये बस इतना है कि ये कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये चार्ट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसमें कुछ हाइड कर देते हैं, और फिर आपको चाहे तो आप वॉल्यूम इनेबल कर सकते हैं। तो सर जो वैसे कुछ टेबल बनाए थे ना सर आपने, टेबल पे कौन सा? जो ये टेबल है हाँ ये सर, टेबल, इसमें डिफरेंट, वॉल्यूम। हाँ हाँ इसमें वॉल्यूम सर। हाँ इसमें तो ऐड कर सकते हैं, इसमें तो ऐड करवा दूंगा मैं। हाँ इसमें सर ऐड करना है, ग्राफिकली शो नहीं करना है सर वॉल्यूम। इसमें जैसे कॉल ओआई और पुट ओआई चेंज होता है, और जितने रेशियो से चेंज होते हैं, या कॉल जितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वॉल्यूम कितने चेंज हो रहा है। अच्छा, कॉल और पुट का अलग अलग वॉल्यूम? हाँ सर, हाँ, जैसे यस हाँ सर। राइट, कॉल का सिंगल हाँ राइट स्ट्राइक प्राइस का से कॉल का चेंज हो रहा है ओआई, तो वॉल्यूम भी चेंज होंगे, उसी हिसाब से पुट के भी चेंज होंगे और वॉल्यूम भी चेंज होंगे। तो जैसे कि ठीक अभी है। पुट में अनवाइंडिंग हुआ सर, तो हाँ पुट में अनवाइंडिंग हुआ तो कितने अमाउंट में अनवाइंडिंग हुआ, जी, और वो ओके, जस्टिफाइड है कि नहीं है, वो डिपेंड कर जाएगा ना सर ओआई के बेसिस पे। राइट बराबर, वो चीज सर हम देख रहे थे। ठीक है ठीक। और इसमें सर आपने जो बिल्डअप बात की है सर, इसमें हमारे पास दो बिल्डअप है, एक कॉल साइड के लिए बिल्डअप और एक पुट साइड के लिए बिल्डअप। जैसे रेड में है तो मैं कॉल साइड का बिल्डअप सोचूंगा, राइट, करेक्ट, और सर यही अगर कलर ग्रीन हो जाए तो पुट साइड का बिल्डअप सोचूंगा। हाँ करेक्ट, बराबर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। राइट। Any other questions? Any other? Okay. Let us take. I'll just 1 minute. Let me. I'll just stop. Pause the. हाँ. तो चलते हैं फिर. अभी इसमें कोई डाउट? अभी any more doubts? Anybody has? देखता हूँ चैट में अगर किसी ने कोई डाउट पूछा हो. सर इस डाटा में एक बार पिछले क्लास में आपने ये बिल्डअप के हिसाब से बताया था इसका यूज, तो एक बार उसको बता पाएंगे क्या सर? कौन सा वाला? सॉरी, कैसा? इसी डाटा में सर आपने बताया था, जब ये लॉन्च नहीं किया था ना आपने, पिछले क्लास में जब हिंदी का क्लास हुआ था एक, हाँ बिल्डअप के हिसाब से इसमें कैसे चेंज हो रहा था परसेंटेज में, वो देखने के लिए आपने बताया था। वो तो बस एग्जैक्टली वही है। ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बस वही है ये, कि आप अगर एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए। मैंने मेरे ख्याल से और कुछ अलग तो बताया नहीं था, बस ये चार्ट नहीं था उस वक्त हमारे पास, तो मैं आपको यहाँ परसेंटेज पे यहाँ पे दिखा रहा था मैं। हाँ सर। तो ये बस यहाँ भी देखना तो वैसे ही है। आप अगर यहाँ से आप चालू करेंगे, अगर आपने देखना चालू किया, दोनों साइड अनवाइंडिंग सबसे ज्यादा आपको देखना पड़ेगा कि आप कब आएगा। यहाँ पे ये ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा अनवाइंडिंग है। ये पहला अनवाइंडिंग आया है यहाँ पे 0.81 और 1.76,
ये हमने चार्ट पे जो देखा था वही है 1130 1133, और फिर से उसके बाद आप देखेंगे कि स्टडी पूरा का पूरा कॉल साइड बिल्डअप ही है, धीरे से होता आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप है, लेकिन मोस्टली अनवाइंडिंग जो है सबसे ज्यादा इस तरफ ही हो रहा है, और यहाँ पे बिल्डअप जो है कम है कॉल साइड के हिसाब से। कॉल साइड के हिसाब से आप देखेंगे कि वही ये जो आप चार्ट में देखेंगे तो बराबर दिखता है, इसमें यहाँ पे ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन अनवाइंडिंग तो आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं। यहाँ फिर से 1242 1245 जो मैंने कहा था, उसी टाइम पे अनवाइंडिंग है यहाँ सेम। ये जो रेड में 2.6 से 1.28 ये अनवाइंडिंग, 0.234 हाँ ये अनवाइंडिंग है सर। हाँ बस ये अनवाइंडिंग, क्योंकि ओआई चेंज है ना ये, तो यहाँ पे नेगेटिव ओआई चेंज मतलब अनवाइंडिंग, पॉजिटिव जो 0 से ज्यादा हो तो फिर वो बिल्डअप, ये अनवाइंडिंग। बस यही वाले ये दो वैल्यूज जो है, ये पूरे के पूरे जो वैल्यूज हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे चार्ट पे दिखा रहे हैं, पूरा वही है। ये जो परसेंटेजेस है, परसेंटेज जो आपको दिख रहा है वही परसेंटेज, ये वाले परसेंटेज, बस ये चार्ट पे दिखा रहे हैं, बस ऐसा है। सर प्लीज एक बार मल्टी स्ट्राइक ओए में जाइए। हाँ इसमें यूएसडी आईएनआर सेलेक्ट कीजिए सर। इसमें ऐसे ट्रेंडिंग स्ट्राइक बिल्डअप और अनवाइंडिंग थोड़ा दिखाइए सर। ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स बिल्डअप एज वेल एज अनवाइंडिंग सर। करेक्ट सही है सर। ओके, अनवाइंडिंग बिल्डअप अनवाइंडिंग सर। अनवाइंडिंग में कुछ तो दिखा नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, बिल्डअप में दिख रहा है। ये तो मैंने ये आप इसका फिर भी हिस्टोरिकल आपको, भी चेक कर रहा था, हिस्टोरिकल भी चेक कर रहा था। बिल्डअप में दिखा रहा है लेकिन अनवाइंडिंग में बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। ये अनवाइंडिंग आपको एक बार दिन में आप देखिए, दिन में अच्छा, देखिए, क्योंकि अभी जो है ना, ये जो आपको हाँ। स्टेटस दिखा रहा है, ये यहाँ का दिखा रहा है मार्केट क्लोज का। अच्छा, मार्केट ओके। क्लोज में आप ये देखेंगे कि 0 के नीचे सिर्फ दो ऑप्शंस है, ये पुट वाले, ओके तो सिर्फ ये वही दिखा रहा है ये बस। ओके तो मार्केट के टाइम पे देखिए बेटर रहेगा। सर। हिस्टोरिकल में भी मतलब नहीं दिखाएगा क्या? दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये जो पूरा हमारे पास एंड ऑफ द डे ये है ना, आप यहाँ पीछे टाइम में नहीं जा सकते हैं। क्या अगर आपको दिन के 11:30 बजे क्या कैसे मार्केट था, तो वहाँ हाँ। के 11:30 बजे ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स अलग रहेंगी, ओके और ये मार्केट के एक बार मार्केट बंद होने के बाद सिर्फ ये मार्केट के क्लोज का स्टेटस दिखाएगा बस। सर। वो तो लास्ट में दिखाएगा ना, लेकिन जब बाकी 9 बजे 11 बजे वो सब तो दिखाना चाहिए ना, क्या नहीं बिल्डअप नहीं था क्या, और क्या, नहीं जैसे वो तो, अपने बैंक निफ्टी में दिखा रहा नहीं वो भी वैसे ही दिखा रहा है। अगर था। कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए, अभी आप Okay. बैंक निफ्टी अगर सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये जो है आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे चल रहा है, यहाँ ये मार्केट क्लोज होने के टाइम ये जो है ये स्ट्राइक्स ट्रेंड हो रहे थे, यानी कि नीचे अनवाइंडिंग सबसे ज्यादा इसमें चल रहा, ओके ओके ऐसा तो दिखा। लाइव में दिखाएगा सर। हाँ लाइव में देखिए बराबर दिखेगा। ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके, सो आई गेस नथिंग एल्स इन दिस। इसमें और कोई डाउट्स नहीं, तो मैं आगे चलता हूँ, राइट। तो ये प्राइस वर्सेस ओआई जो है, ऑप्शन बायर्स अगर कोई हो यहाँ पे, एनीबडी एनी ऑप्शन बायर्स, so 1 or 2 concepts are there in this. So you can, option buyers can probably, so they have to be, option buyers have to be precise. I mean, they can't like buy an option and then probably just sit for the whole day, because they have to, because their time decay is working against them. So kindly mute whoever is there. It'd be good if you can mute. Yes sir. Yes, sir. Okay. Okay. So option buyers don't have the luxury of sitting for the whole day and trying to grab profits. They have to quickly buy and exit the trade. So they have to be very precise, like a sniper. I mean, they have to identify a trade and then quickly get into it and get out, take profits and get out. So how do you do that?
One way is, I mean, it may not give you trade every, you will get the trade on most of the days, but you may not get optimal trade many times. But a very good way to do it is to monitor open interest. This red line is open interest, and you start monitoring at the money strikes in the morning. So whatever script you want, and look for continuous or significant rise in open interest. Now, in this case, you did not, I mean, for the whole day it kept rising. So there's no point trying to take a trade after 3 o'clock. But here, if you see on the put side, there was a huge increase, and then market went flat. Ideally, I mean, this is not a good signal, but again, the open interest continued to go high, and then it started trending down. After a big increase in open interest, when it goes flat and then starts to trend down. When it goes flat itself, there is an indication that the option price is going to take off to the upside, but you could ideally wait for it to go down a little bit. And so this was a very good point to buy. This was also a good point to buy, rather even this also, because whenever it went flat, big increase and then flat, because this is put writers selling the puts. They are bullish, rather, because they are selling puts, so bullish. So whenever they start unwinding, whenever put writers start unwinding, that means they are sensing problem in their position. They are sensing a risk to their position. It is the same concept that we discussed in total PE COI. Why would put writers unwind the position? They have been building since morning. So why would they unwind? Because the market is going down and the put price is rising. So then they can't hold forever. I mean, they have to unwind. So this is at the money. So that's the reason why probably it has taken a little bit more time for it to start unwinding. You can even morning itself, you can start maybe to watch a little bit inside the money, in the money, deep in the money options, a little bit in the money. They'll start unwinding quickly. So as soon as after a big build-up in OI, if it starts to unwind even a little bit, so if you see even it going flat here, the price started to shoot up. Going flat from here to here and going down, this whole, it's shooting up, price is shooting up. Now you can buy here. Generally, you would have to have a stop below this. It's a little bit far away. This was probably a little bit closer over here when it started flattening out. Because a little bit your price SL would have been here. But even here, flattening out, this is also a good position to buy. This is also a good position to buy. Maybe instead of over here, you can probably have below these 1 or 2 lows, you can have a SL over here. Based on whatever your risk appetite, maybe you can reduce your position size because you're taking a bigger risk. So you can probably have lower position size here and maybe a lot more bigger position size if you're taking a risk here. It is less risk. But the key thing is, once you get a move to the upside, you should take your profits and leave. I mean, you can't hang around. You can't hang around in these kinds of trades. Now you can go and take a look. You go and look at whatever other strikes that you want, other scripts that you want. But the thing is, you will have to watch for the same pattern, maybe go slight in the money, watch for the same pattern, and then try to capitalize. You will not get these trades, you may not get every day. Generally, you would get, and it would be subtle, a big increase here and then unwinding. You could buy here, but your stop has to be somewhere below this here, because then you got to pull back here. And then you get this, you get to capture a little bit. Again, this also is there. If you had bought after this extended move, then obviously it would not work. You would get stopped out over here maybe. And then after that, it did not work. Yeah, somebody had 1 minute. The voice is broken. Is my voice broken? Is it not clear? No, very clear. Clear, Very sir, clear. clear.
clear. Clear. Okay, somebody is saying it is broken, but okay, maybe okay, some issue at his end. Okay, so any question in this? And this is the Sir, concept. Yeah, small doubt, sir. Sir, which moves first, price or OI, sir? generally price. See, because Price, no? Okay. see, OI is always second, because it is done in response to something that has happened. Price Okay. will always move first. Right, The right. OI changing here is as a result of movement of price. Because here, Okay. see, people have been buying this option because maybe they think that the market is going to go up. But then once they see that the market is not going up, then they start to unwind. Because that Right. until by that time, price is already moved. So price will always move first. Right, sir. Move first. Thank you. Yeah. So Green this, line is VWAP line. yeah, VWAP. This is a very old tool, so we have not yet changed it. ATP, we have used ATP because in the data feed we get this value as ATP. So this is the VWAP from the data feed actually. So next update in this will change this to VWAP. Yeah. Okay, let me cover one or two other tools. We still have I have about 20-25 minutes. So unless if you have few questions, you can start off, or I'll keep covering few other tools. One is OI scan. Here, what you can do is, yeah. सर जी, हाँ बोलिए। सर अभी आपने जो इसके बाद पहले वाला जो चार्ट जो दिखाया था ना, हाँ, तो उसमें पुट जो है 16,200 का पुट में जो ओआई रेड लाइन जो बढ़ रही है, इट मींस के पुट का सेलिंग हो रहा है। हाँ, जनरली पुट का सेलिंग हो रहा है यहाँ पे। हाँ, और प्राइस बढ़ रहा है। हाँ, जो ब्लैक कलर का लाइन है वो प्राइस देना, आई थिंक वही रहा। हाँ, राइट, बराबर। तो पुट का सेलिंग बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। सेम इस तरफ 16,200 का जो कॉल है, हाँ, उसके अंदर भी सेलिंग बढ़ रहा है। हाँ, बराबर, रेड लाइन है, लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है। करेक्ट। लेकिन ये अगर मार्केट नीचे जा रहा है ना, मार्केट तो नीचे जा रहा है, हमको ये पता है ऑलरेडी। तो जनरली जब ओआई बहुत ज्यादा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो प्राइस नीचे ही आता है ऑप्शन। क्योंकि राइटर्स बहुत ज्यादा करते हैं, राइटर्स ही मेन ये यस्टरडे का है सर। वही करते हैं। हाँ, ये फ्राइडे का है, बराबर। फ्राइडे का है, तो फ्राइडे को तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हाँ, तो सीधी बात है कॉल तो नीचे आने वाला है। हाँ, नीचे आने। तो ये जनरली तो क्या है कि स्ट्रैडल शॉर्ट करते हैं लोग, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल होता है। स्ट्रैडल शॉर्ट की वजह से, इसीलिए सब दोनों जगह से बिल्डअप होता ही है पहले तो मॉर्निंग, लेकिन बाद में जो अनवाइंडिंग चालू होता है, तो वहां पे आपको फिर वो मेन इफेक्ट दिखता है इसमें, क्योंकि वो उस तरफ का जो है प्राइस फिर बढ़ जाता है। तब तक मार्केट जनरली सर सुबह से चार्ट देख के डिसीजन लेना चाहिए कि दोपहर के बाद लेना चाहिए? क्योंकि अभी देख रहा हूँ तो कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, दोनों देख रहा हूँ। नहीं, अभी तो कल का मार्केट ऐसा था, तो ऐसे ये आप अलग अलग हिस्टोरिकल जाके देखिए, हिस्ट्री का देखिए, और दूसरा वाला देखेंगे। अब ये 7 तारीख का देखेंगे। अब ये आपको सुबह में भी मिल सकता है चांस। यहाँ पे इतना बढ़ गया और यहाँ पे गिरना चालू हुआ, तो बस ये यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन था, यहाँ पे जो फ्लैट हो गया था, यहाँ पे पहला। तो सुबह में भी मिल सकता है, ऐसा कोई नहीं है। सुबह में भी तो आपको पूरे दिन मॉनिटर करना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करता है, हर एक दिन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बस सर मैंने अभी 3 दिन पहले पेड पैकेज लिया आपका आई चार्ट का। अच्छा, ओके। और मेरा फर्स्ट टाइम आज जूम पे मैं आया हुआ है आपके। ओके, अच्छा, ओके। अच्छा, और एक इसमें और एक चीज है, आई फॉरगॉट टू टेल यू। ये जो आप देखते हैं, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, तो ये अगर जब तक वीवैप के अगर नीचे हो, तो फिर ये कंसीडर करना मतलब नहीं है बाइंग के हिसाब से। अगर यहाँ पे जो है वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, यहाँ पे फ्लैट हो गया है, लेकिन आप यहाँ पे बाइंग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वीवैप के नीचे है। तो वीवैप के ऊपर हो तो ही कंसीडर करने में मतलब। ग्रीन वाला लाइन वीवैप का है क्या? हाँ, वीवैप है, ग्रीन लाइन, ग्रीन वाला। हाँ, एटीपी लिखा है वही, बराबर है, करेक्ट। ओके, यानी उसके ऊपर प्राइस अगर रहता है वही कॉल या ऑप्शन हमें लेना है। हाँ, बस वही लेना है, तब तक एंट्री नहीं करना है। नहीं, तब तक नहीं करना है। तो ओके, थैंक यू सर। ओके, राइट।
सर इसमें स्ट्राइक प्राइस भी खुद से सिलेक्ट करना होगा सर या ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा ये? नहीं, ये तो आप जब ये ओपन करेंगे तो एट द मनी सेलेक्ट होगा। तो अगर मार्केट मूव हो चुका है तो आप चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर एट द मनी देख सकते हैं। आप स्ट्राइक्स थोड़ा ऊपर नीचे चेक करके देखिए तो उसमें अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे। तो जहाँ पे बेटर पैटर्न दिखता है वो पैटर्न आप वो स्ट्राइक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब हर एक में अलग अलग होता है। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो शायद ये इसमें आप 16,200 देखेंगे उस दिन का 7 तारीख का, तो पैटर्न कंप्लीट पूरा अलग ही होगा इसमें। हाँ, तो वो आपको वो थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा आपको उसमें स्ट्राइक्स। ओके ओके, तो ये दैट्स अबाउट एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टूल? सर मैंने एक YouTube वीडियो से सीखा है जहाँ से चार्ट मुझे हुआ था कि इनका पैकेज लीजिए, ऐसा सजेशन मिला था जी। तो उसमें ऐसा सिखाया गया था कि अगर मार्केट में कोई कॉल शॉट अगर होते हैं तो इन द मनी पुट या इन द मनी के जो कॉल होते हैं उसके अगर हम OI चार्ट देखते हैं तो हमें बेटर आइडिया मिलता है, क्योंकि बड़ा प्राइस वाले में जल्दी ज्यादा यानी सेलिंग होता है। हाँ, और वैसे भी उसमें जो राइटर्स का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो हाँ, वो अगेंस्ट जाने में अनवाइंडिंग आप जल्दी पकड़ सकते हैं उसमें। विजय कुमार इन द शर्मा जी मनी भी में, वही सिखाते हैं। इन द मनी में, इन द मनी में, करेक्ट। आप इन हाँ द हाँ मनी सर, दे सकते हैं, बराबर है। हाँ इन द correct, मनी, हाँ सर, हाँ। जी, राइट। तो सर वो स्ट्रेटेजी सही है ना, हमें इन द मनी में देख के आगे डिसीजन लेना चाहिए अगर करेक्ट है, जितना। करेक्ट है, करेक्ट स्ट्रैटेजी है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट राइट। So let me quickly explain about this tool also. This is you can use this tool to quickly select scripts for trading, intraday trading in the markets. So if you like to trade in stocks, or even if these are cash stocks, you can shortlist and then probably go and trade in cash. That also is valid. So the basic idea is, if say suppose the market is bullish and you want to say I'm checking this for now, I'm not looking at combined OI. So if market is, for example, market is bullish, so you could probably for the day you can check which is in long build up. So type LB here and press enter. You have to press enter after typing LB. So this will quickly list you for the day, for today. Today, this is today's section. So for today, whichever stocks are in long build up. So long build up means price change is positive, OI change is also positive. Now this has to be significant. So let us take a look where price is greater than 1% and OI change is greater than 3%. So these two are what you can focus on. Or if you want to see even for less than say maybe 0.6%, you can take a look. They are still only 2. It is up to you. 0.5, there are 3. So it is up to you, but OI change is good to have 3%. So there is significant OI change. So this is one. You can also additionally make sure that last 60 minutes also is long buildup. So you can say in long here also you can put long buildup and press enter. So then only 2. So you can focus on these 2. So start looking at this in the morning around 9:30 onwards. You will get a good short list. Of course, this is Friday's data, so it is all negative. So that's the reason why it's all you have not got any significant number of stocks. So what you can do is, let me take this out. Let us look at short buildup. So since market is negative, we look at short buildup. This price change will say less than -1. Price change less than -1, OI change greater than 3, short buildup, and here also I'll say short buildup. So you get list of stocks quickly that you can go and trade intraday. So you can go to your charts and see whether you are getting any buy sell signals or whatever, and based on that you can trade. So this tool you can use for yeah. Can I ask you a question, please? Yes. I mean, this was a request I think I made on one of the Telegram channels, but would it be possible in any future release that you can make the name of the scripts
like a clickable link which can easily open, say, the option chain or the, you know, the OI comparison chart, the one which we have seen Yes, before? yes. Actually, this is pending to be done. It's just that we are really bogged down by these FNO charts, the trading view charts transition. So all our developers are busy. So all these changes are pending, and we'll take it up very soon. So most of our developers will get free in the next maybe hopefully next week. So I'll put them on, and all these are small changes, so we can do it easily. So we'll try and get this done. Thank you, sir. And yeah, just one another small question. So we have a similar scan or OI scan for options as well, and we have this for futures. Which one of these two do you suggest we should use more often for finding these stocks in downtrend or uptrend? Options, we do not have such a scan actually. I mean, you have different scans for options, but we have open, high, low, but we don't have something like this. This is for selecting scripts actually for trading. So for options, we don't have something like this. Yeah. But we have support resistance for option in beta. Sorry. We have something in support resistance, right? Support resistance is there. Yes. Yeah. This is based on option, right? Yeah, but yeah, this is very different. But this is definitely there, but this is a little bit different. I mean, yeah, this is again actually, strictly speaking, again strike selection, because this is also this is about script selection only, similar to this. You're trying to find out which scripts are near the support. Actually, it's that. My bad. I was actually referring to IVR scan. IVR options is there. Yeah. Yeah. So that is very similar. Looks very similar to this one, and I have been using that. So now in futures, when I see this, my question was like, which of these two are more reliable to find scripts for like building your position? See, if you are trading in intraday in futures, then this would be good. IVR IVP scan is you can identify here the scripts that have either high volatility or low volatility. So in IVR and IVP, I would suggest use IVP more. So here you can say greater than 60 or so, or even rather 70 or so. So you know these are high volatility scripts. So once you know that these scripts where the IV percentile is high, so then the volatility is high. So you can probably you can have short option positions here, or short straddles or credit spreads or whatever. So all these. Understood. So you could use this for that, something like that. This is better. So this is for a very different criteria. I mean, you're searching for trading futures intraday. But this is for positional structured options trades. If you want to do, then this is really good. Thank you for clarifying that. This is really helpful. Thank you. Yeah. Okay. So yeah, this is about futures OI scan. We have 15 minutes. Any questions? Any particular tool you want me to focus? कोई भी टूल हो जिसके बारे में आपको जानना हो तो मैं डिटेल में बता सकता हूं. अभी 15 मिनट है मेरे पास. सर अगर कोई सिंपल स्टॉक के बारे में मुझे देखना हो कि मैं इसे खरीदूं या ना खरीदूं. हेलो. हाँ तो अच्छा, ये पोजिशनल के लिए इंट्राडे के लिए? पोजिशनल के लिए सर. पोजिशनल के लिए सबसे पहले डे वाइज में जाइए. डे वाइज प्राइस एंड ओआई. और इसमें अब ये 5 डे बिल्डअप, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, और ये सबसे रीसेंट डेटा है 7, 8, 9, 10 तारीख का, फ्राइडे थर्सडे वाला, रिवर्स में है सॉर्टेड. तो ये जो सबसे ऊपर वाला, ये देखिए रीसेंट वाला जो है, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं. ये जो शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, मोस्ट लाइकली अभी भी ये कंटिन्यू इसका शॉर्ट में ही रहेगा. आप कोई भी इसमें जाइए, आप से भारतीय एयरटेल में, यहाँ भी शॉर्ट है लास्ट 3 डेज. और ये 3 डेज मतलब ये 5 दिन का बिल्डअप दिखा रहा है. तो सबसे ऊपर वाला देखिए, सबसे ऊपर वाला. और ये
ये अगर आपको शॉर्ट दिखा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है तो बेरिश है। तो लेकिन ये वैसे ही ये सिंगल डे बिल्डअप वाला ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, एकदम डार्क ग्रीन, ऐसे ये वाला ग्रीन नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो फिर बेरिश है, तो ये पूरा बेरिश है, तो आप बेरिश ट्रेड्स में ही रहिए आप। और इंट्राडे के लिए सर? इंट्राडे के लिए तो आप ये यही देख सकते हैं। ये जैसे आप ये शॉर्ट करेंगे, आप ये शॉर्ट करते हैं, आप इसमें जाइए, ये जी। चार्ट जाके देखिए, और इसमें आप जाते हैं, एक मिनट एग्जाम्पल लेते हैं, बजाज फाइनेंस, चंबल फर्टिलाइजर। अब ये जो आपको दिखा रहा था, ये आपको मॉर्निंग 9:30 से आपको ये ओपन रखना है। आप जो भी आपका ये क्राइटेरिया आपको लग रहा है कि अब मार्केट आज नीचे जाने वाला है, तो अब ये आपका क्राइटेरिया शॉर्ट में एंटर कर लीजिए, या 2 पेज ओपन कर लीजिए, एक में शॉर्ट एक पे लॉन्ग लगा दीजिए, और ये आप देखते रहिए। एक बार आपको ये दिखे चंबल फर्टिलाइजर्स दिखा, आप ये इसमें डाल दीजिए, और यहाँ पे आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाइए, और उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। अभी आपके हिसाब से आपको लेना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस देखिए, RSI, मूविंग एवरेजेस, या जो भी है, आपको 5 मिनट 3 मिनट पे आपको जैसे भी एनालाइज करना हो तो आप ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सर जी, ये जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू का है क्या इसमें? हाँ, ये जो हमारा हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, ये बेटा में ये FNO चार्ट्स हैं, ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, ये डेटा हमारा है। हाँ सर, तो अगर इसको हम अगर मल्टी चार्ट में अगर बड़ा स्क्रीन पे देखना हो तो सब चीज एक साथ दिख सकती है क्या? हाँ, आप कर सकते हैं। जैसे कि एक साइड OI देखना है, एक साइड चार्ट भी देखना है, एक साइड ऑप्शन भी लगा दिया, तो ऐसा सब कुछ एक साथ दिख पाएगा? हाँ, लेकिन इसके अंदर ही आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये जो पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे था। अच्छा, अभी 2 चार्ट दिख रहे हैं, ऐसे ज्यादा चार्ट भी दिखेंगे? अच्छा, हाँ, ओके ऐसे दिखेंगे, आप कर सकते हैं। अब ये पूरा ऐसा, ये यहाँ से आप कैसे, कौन सा भी पैटर्न चाहिए, कितने विंडोज चाहिए, लगा लीजिए। अलग अलग विंडो में अलग अलग चैट सेट कर सकते हैं। हाँ, अलग कर सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर जो भी आप जो चाहिए कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, राइट। हेलो यस सर, क्या आप ये टोटल कॉल पुट करेंगे? टोटल कॉल पुट फिर से? हाँ। ओके, हिस्ट्रिकल में 9 जून का एक्सपायरी। किसमें? सॉरी, हिस्ट्रिकल डाटा में हिस्टोरिकल 9 जून बैंक निफ्टी। हाँ, नहीं निफ्टी। ओके, डेट सेलेक्ट कीजिए 8 जून। अब इसके अंदर जैसे मार्केट जब ओपन हुआ था तो डेटा नेगेटिव थे। हाँ। आफ्टर देन पॉजिटिव, फिर अगेन नेगेटिव। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे 10-10 पे जो डेटा था 89 लाख नेगेटिव था। ओके, एक मिनट, हाँ मैं ये VWAP पे निकाल देता हूँ। हाँ, बोलिए सर। 10-10 पे 10-10 पे आप देखेंगे तो सीट पे देखिए, डेटा शीट में। ओके, हाँ, जो नेगेटिव था 89 लाख। राइट, करेक्ट। उसके बाद में मार्केट में थोड़ा सा अपमूव आया, ये डेटा 69, 60, 51 डेटा कन्वर्ट हो गया ये। राइट। तो इस पॉसिबल के अपन जैसे 89 है जो हाईएस्ट नेगेटिव में है, और अभी तक जैसे अपन मार्केट स्टार्ट हुआ, हाँ, अपन इसको कुछ डार्क कर दें या समथिंग कुछ? अच्छा, ये कॉलम में चाहिए? ओनली डिप्स में। एक्चुअली मैंने उस दिन में मैंने ट्रेडिंग किया था, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करके ट्रेडिंग में, जैसे मार्केट में जब 51 लाख डेटा नेगेटिव हुआ था, ओके, तो निफ्टी 380 के आसपास में था, तो मैंने निफ्टी वहां पे बाई किया एज ए डेटा कैलकुलेट करके कि भाई 89 अगर ब्रेक होगा तो मैं मेरा स्टॉप लॉस कर दूंगा। ओके, जो अपन मार्केट डेटा जो पॉजिटिव हुआ था, आप देखोगे जब 54 लाख पॉजिटिव हुआ, डेट टाइम निफ्टी था 522। हाँ, और जब मैंने यहाँ पे जो इसको नोटिस किया, डेट टाइम निफ्टी था 390, 380। राइट, ओके। तो अपन क्या इसमें हाइलाइट है, बॉर्डर है, समथिंग कुछ इसमें ऐसा डेवलप कर सकते हैं? हो सकता है, क्योंकि अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसमें तो ऐड किया है हमने हाईएस्ट, और ये अब हाईएस्ट ऐसे जस्ट लाइक इसमें अगर अपन मतलब रेड प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ ग्रीन रेड तो डायरेक्शन
के हिसाब से यूज कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं पूछता हूँ ऐसे कोई इंडिकेशन दे सकते हैं या फिर ऐसे कुछ कर सकते हैं। जैसे Try मार्केट पॉजिटिव हुआ 54 लाख ये 10:45 पे। तो हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क हाँ करना चाहिए। मतलब हाँ हाईएस्ट और लोएस्ट। अब ठीक है। मार्केट में आप देखोगे अप मूव में देखोगे तो 12:50 पे 2 करोड़ 4 लाख डेटा पॉजिटिव था 12:50 पे। हाँ, और फिर मार्केट में 193 मैंने मेरी तो मतलब एजे में इसको डाटा देख के कर रहा था, मैंने मेरी एग्जिट कर लिया था दैट टाइम, मैं शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया था। एजे के ये भी 2,04,000 का डेटा अगर क्रॉस ओवर होगा आफ्टर देन आई विल एग्जिट माय पोजीशन। ओके, मतलब ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट हो तो क्या मतलब एक डेटा भी रीड करना जरूरी है। हो जाएगा अगर सर, हो जाएगा। मार्केट लो बन रहा है तो डेटा अगर लो नहीं बन रहा है दैट मींस जी। मार्केट में रिवर्स के चांस बनते हैं। जी, मैं कह रहा था ये मार्किंग तो करवा देते हैं हम लोग, डेफिनेट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर मुझे पूछना है सर। हाँ सर मुझे हमसे आज ही मैंने सर सर्च किया सर उसको। ओके। सर मैं निकाल के रखा हूँ सर, मैंने अपना टोटल पीसी ओआई डिफरेंस वाला। तो सर इसमें सर वी वेब की लाइन आ रही है ना सर, वी वेब। वी वेब हमारा 16,297 पर है और हमारा फ्यूचर प्राइस है 16,266 पर। तो इसका मतलब क्या हमें शॉर्ट करना है, तो वो प्राइस पीछे चल रहा है। कौन सा ये एक मिनट ना, निफ्टी का सर लेटेस्ट है, 16 जून का। हाँ कल का, फ्राइडे का। ओके जी हाँ, जी जी जी। इसमें बताइए। तो वी वेब हमारा, अगर वी वेब की अगर लाइन है हमारी, प्राइस आगे चल रहा है और फ्यूचर प्राइस हमारे पीछे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको शॉर्ट करना है, सेल करना है ना। हाँ मतलब बेरिश है तो अब बेरिश है तो मुझे हाँ। ट्रेड लेना है, तो कितने पाउंड का ट्रेड लेना पड़ेगा सर यहाँ पर? नहीं, आप ये कहाँ ले रहे हैं उसके हिसाब से, क्या किस पॉइंट पे? और सर टाइम फ्रेम क्या 15 मिनट के लिए रहेगा ना सर? ये 3 मिनट वाला है, ये तो 3 मिनट का है। नहीं, मैंने 15 मिनट लगा रखा है सर अभी। ओके 15 मिनट। तो अब ये ट्रेड कहाँ पे लेते हैं उसके हिसाब से है सर, कहाँ पे? अब ये बेरिश तो है पूरा का पूरा। हाँ, अगर प्राइस, अगर वी वेब से हमारा प्राइस पीछे चल रहा है तो उसको मतलब बेरिश ही माना जाएगा ना सर? पीछे मतलब नीचे, प्राइस नीचे। हाँ नीचे 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 चल रहा है, हाँ, जैसे हाँ फिर तो 16,266 है जी। हाँ, अब आप हाँ अगर वी ट्रेड वेब आप से आगे निकलता है तब हम उसे बुलिश मानेंगे। करेक्ट करेक्ट राइट, तब बराबर आप उसे, तब उसको बुलिश मानेंगे। ठीक, बराबर ठीक सर, थैंक यू। राइट, ओके जी थैंक यू। Sir, a quick question. Yeah. Can we have, I mean, can these charts also be ported to TradingView? Or the reason why I'm asking is there a way we can draw kind of a channel or a trend lines on these? That would be really helpful. This is again something for future, not now, but that would really be helpful. It's going to be very difficult to put these into TradingView because this requires a very different charting software, because TradingView is specifically for prices, actually prices and their indicators. So something like this, like with so many different lines and all that, we will not be able to do it. But we have moved these charts to a different API that I think it supports drawing also. So I'll ask my team to enable, and there is a bar that comes on the side and you can probably draw trend lines and all that. So I'll try to enable as a experiment, and I'll put those under beta. So we'll try it out, and then you can tell me if that it works fine or not. Because I think yeah, my point is that we don't need very elaborate, I think, drawing tools, but very basic ones like horizontal, vertical, and a trend line should be fine. Those, yes, yeah, possible. Yeah, because right now I'm using some kind of a add-on which helps me draw over the screen, but then when the chart moves, I have to readjust all of that. So if anything native would be really helpful. Thank you. Okay. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ये मैंने रिसेंटली आपका पेड पैकेज लिया है, उसमें ऑप्शंस इंट्राडे ओआई ब्रेकअप जो है, उसमें सर स्ट्राइक प्राइस डिस्प्ले पॉसिबल है क्या सर? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में इंट्राडे मतलब इन द मनी में कैसे चेंजेस होते हैं वो ओआई के हिसाब से, वो अगर हम ट्रैक कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा सर। हाँ, आप ये वो इन द मनी आप
चेंज कर सकते हैं ना, आपको जो चाहिए वो। हाँ, लेकिन कॉलम में कहीं स्ट्राइक प्राइस डिस्प्ले नहीं होता है, मतलब वो नहीं, यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तो एक ही स्ट्राइक का है ना, सब सारा का सारा एक स्ट्राइक का है। राइट सर, मतलब अगर मेरे को थ्रू आउट द डे में स्ट्राइक प्राइस वाइज ओआई कैसे चेंज हुआ ये डिस्प्ले अगर मेरे को ट्रैक करना है, तो अगर कॉलम में रहेगा तो वो मैं इजीली ट्रैक कर नहीं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ये टाइम टू दिस टाइम चेंज नहीं होगा, वो है। तो ये अगर कॉलम में हम डालेंगे तो भी सेम रहेगा, 3500 पूरे दिन के लिए वही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सिलेक्टेड वही है, सिलेक्टेड सिर्फ वही है। तो आप जो बोल रहे हैं वो पूरा अलग ही फंक्शनैलिटी है, तो आप बोल रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से चेंज होना चाहिए। नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट केवल वो कॉलम स्ट्राइक प्राइस का अगर कॉलम में आ जाए तो मैं एट द एंड ऑफ द डे इन द मनी में कैसे ओआई चेंजेस होते हैं उसको ट्रैक करना मेरे लिए पॉसिबल हो जाएगा। मैं समझा नहीं कैसे होता है, क्योंकि ये आप यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो ये कॉलम अगर डालेंगे तो वही स्ट्राइक प्राइस पूरा का पूरा वही आएगा। Sir, I think OI snapshot would help. अगर आप OI snapshot पे एक बार जाके देखेंगे तो maybe that is the answer to his question. OI snapshot, this one, आप ये देखिए, इसमें इन द मनी आपको दिख जाएगा, कॉल पुट्स के दोनों के ओवरऑल बिहेवियर दिख जाएंगे, एंड मे बी दिस कैन हेल्प। आई एम जस्ट सेइंग, आई मीन या वैसे तो फिर ऑप्शंस चेन भी चलेगा, ऑप्शन चेन भी एटलीस्ट डेटा तो वही दिखाता है। ठीक है सर, ये एक्चुअली मुझे कैसे है, ये एक्सेल में डाउनलोड करके करके मेरे को वो मैं ट्रैक कर पाऊंगा एक्चुअली, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन को एक्सेल में एक्सपोर्ट करता हूँ और फिर कौन से स्ट्राइक में कैसे ओआई चेंजेस होते हैं वो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। मुझे लगा कि कॉलम में डालेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एनीवे, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, राइट। Okay, we have sir, one second. Yeah. This trading view chart, all skips are not yet added, I think. Currencies and all is not there, sir. Which one is not there? USD INR and all is not there. Forex is not yet added. Forex we still need to enable. Okay. Only futures or NSE FNO is added. Yeah, right. That's what I was saying. We'll be doing it. Our people are working on it. Okay. It will be done. Yeah. Okay, that's it for now. We'll stop today. So we'll